Good evening students and welcome in the world of partnership accounting. We are going through chapter 1 partnership accounting fundamental. कल हमने आपको बताया था कि हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग when partners withdraw fixed amount in the fixed interval of time. मतलब, let me tell you with an example. Suppose a partner makes withdrawal for personal use rupees 5,000 every month on first of every month. मीन्स कि वो पार्टनर 5,000 रुपए का विड्रॉल करता है हर महीने की पहली तारीख को, एवरी मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. सो हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दिस केस? हियर व्हाट इज द टोटल अमाउंट of drawing? Total amount of drawings 5,000 per month, so 5,000 into 12 it is equal to 60,000 rupees. So rupees 60,000 is being withdrawn by the partner. What is the rate of interest? As I have assumed that it is 6%. 6% इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है 600 into average period divided by 12. So how we will calculate the average period, that I will show you here. Calculation of average period. He withdraws rupees 5,000. Suppose the financial year start from April 1. So first withdrawal he made on April 1, 5,000. After that he withdrew on May 1, then June 1, and it goes on till 1st March. That is the last month of the year. So we have to take only the first withdrawal and the last withdrawal. Here also he will withdraw rupees 5,000. So the first withdrawal rupees 5,000 will be used by the partner for how many months? कितने महीने इस 5,000 रुपए का वो इस्तेमाल करेगा? अप्रैल से लेके 1 मार्च तक. रहकर 1 मार्च को विड्रॉल करेगा, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल कब तक करेगा? 31 मार्च तक करेगा. यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने. तो द फर्स्ट मनी दैट ही विड्रू दैट विल बी यूज्ड बाय हिम फॉर 12 मंथ्स प्लस द लास्ट मनी. The withdrawal in the last month will be done on 1st March, and from 1st March to 31st March, this is only 1 month. तो जो लास्ट में विड्रॉल करेगा 1 मार्च को, वो कितने दिन इस्तेमाल करेगा? 1 मार्च से 31 मार्च, यानी पूरा 1 महीना. Therefore 1 month only. Divide by 2 and that is 13 by 2, hence 6.5 months.
So average period is 6.5 months. So we will replace it by 6.5. Now we will calculate this and we will get the amount. So what will be the amount? 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 2 0 cancel and multiply this. We will multiply 6 to 65. 6 5 ja 30, 0, carry over 3, 6 6 ja 36 and 3 39. How many zeros we have to put? 2 zeros. But there is a decimal also, therefore this amount is 3,900. So this is the calculation of interest on drawing. When withdrawal is made at the beginning of every month. Let us take the example of withdrawal is being made on last date of every last date of every month. That is, the withdrawal is made, fixed amount is withdrawn by the partner at the end of every month. Then also we will get, this is amount 60,000 into 6 by 100 into, what is the average period here? Let us calculate. What is the average period? Here we will make withdrawal on 30th April. First withdrawal will be made on 30th because क्योंकि वो महीने के अंत में withdrawal करता है. 30 अप्रैल को निकालेगा पहला withdrawal और जो अंतिम withdrawal होगा वो कब निकालेगा? 31st मार्च. इस दिन निकालेगा. तो इस दिन जब निकालेगा, यहाँ जब निकालेगा पहले 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, तो एक महीना बीत चुका है, इसलिए ये पैसा वो कब तक इस्तेमाल करेगा? 11 महीने केवल, क्योंकि अप्रैल तो बीत चुका है. बिगिनिंग फ्रॉम मई टू 31st मार्च, दिस इज 11 मंथ्स. लेकिन ये जो 31st को पैसा निकालेगा वो तो लास्ट डेट है, इसके बाद तो कोई समय नहीं बचा, इसलिए ये कब तक इस्तेमाल होगा? 0 मंथ डिवाइड बाय 2. Therefore 5.5 month is the average period. So 5.5 divided by 12. 6 1 या 6, 6 2 या 12. दो जीरो कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 55 में. 6 5 जा 30 का 0, कैरी ओवर 3. 6 5 जा 30 and 3 33. 2 जीरो निकाल दिया और एक डेसिमल लगा दिया, यानी 3,300. This will be the interest on drawing if withdrawal is being made at the end of every month. There is one more case. Suppose withdrawal is made on middle of every month. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 into 12 60,000 टोटल विड्रॉल अमाउंट into rate 6/100 into what is the average period here? So we will calculate here. Average period is, we are withdrawing, the partner is withdrawing on 15th April. The first withdrawal is made on 15th April, means half month has gone. After that first withdrawal is made. Therefore this money will be used by partner for 11.5 months. Plus here the middle of the month is 15th March. Here he will use fund for just half month, 0.5 month. Therefore we will add 0.5 divided by 2
means 6 months. Therefore, average period is 6 here. 6 by 12. 6 to the 12. 2 to the 6. 0 cancel. यानी 1200. So, 3 into 600, that is 1800. So ये 1800 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है. So this is how we calculate interest on drawing when partner withdraw a fixed amount at fixed interval of time. These are the 3 cases that I mentioned here. Let us take the example of quarterly withdrawal. I am erasing it. I will take the same example, but here every quarter a partner make withdrawal for personal use rupees 5,000 every quarter. Quarterly withdrawal करता है. So you know कि in a year how many quarters are there? 4 quarters. If we write the name of month, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. These are the 12 months. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is the first quarter. This is the second quarter. This is the third quarter, and this is the fourth quarter. First, second, third, fourth. These are the 4 quarters. And now question has been given that the partner may withdraw for personal use rupees 5,000 every quarter on first of every quarter. On the first day of the quarter. तो इसका मतलब कि अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में वो कब निकालेगा? 1 अप्रैल को निकालेगा. यहाँ पे 1 जुलाई को निकालेगा. यहाँ पे 1 अक्टूबर को निकालेगा और यहाँ पे 1 नवंबर को निकालेगा. जैसे हमने मंथली निकाला वैसे हम ये भी निकालेंगे. Now what is the total amount of drawing? Let us solve. Total amount of drawing 5,000 into 4 because there are 4 quarters. 20,000 is the total withdrawal amount. So we will write here 20,000. Rate of interest is 6%. Divide by average period upon 12. So what is the average period? Calculation of average period. पहला विड्रॉल 1 अप्रैल को किया तो इस पैसे को वो कितने दिन इस्तेमाल करेगा? पूरे साल इस्तेमाल करेगा. यानी कितने दिन इस्तेमाल करेगा? 12 months. और जो अंतिम क्वार्टर का विड्रॉल करेगा वो कब करेगा? फर्स्ट जनवरी. 1st January means January, February, March. All these 3 months he will use this amount. Therefore 12 plus 3 divided by 2 means 15 by 2 is equal to 7.5 months. So average period here will come 7.5. So let us solve it. You put a 10 here and cancel the decimal. Then you cancel these 2 zeros and 1 zero by this, and then it will be 120 into 75 is equal to 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6. 12 7 जा 84 and 6 90 and 1 0.
9,000 rupees. So this is how we will calculate when fixed amount is being withdrawn by the partner at the beginning of every quarter. Similarly, suppose we change the case, the withdrawal is being made at the end of every quarter. At the end of every quarter. अगर यही विड्रॉल क्वार्टर के एंड में होगा, यानी कि पहला विड्रॉल जो होगा, लेट मी इरेज इट, जो पहला विड्रॉल होगा दैट विल बी ऑन 30th जून, और जो अंतिम विड्रॉल होगा, अंतिम महीना कौन सा है, मार्च, यानी 31st March. So let us calculate average period. Here average period is equal to the first money withdrawn on 30th June, means 3 months has already gone. So partner will use this money for only 9 months. Therefore 9 plus, and the last withdrawal will be made on 31st March. Therefore no time left, therefore 0. 0 months he will use divided by 2, that is 4.5 months. So the total withdrawal is 20,000 into 6 upon 100 into 4.5 divided by 12. In this way we will calculate the interest on drawing which is being done at the end of every quarter. आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो है. सिमिलरली अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉल किया जाता है, विड्रॉल इज मेड एट द मिडिल ऑफ द क्वार्टर. If withdrawal is made at the middle of the quarter, then what will be the case? मिडिल का मतलब हो गया चाहे वो मंथली में हो चाहे वो क्वार्टरली में हो, उसका आंसर हमेशा 6 मंथ ही आना है. लेट अस कैलकुलेट एंड सी एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर. सो लेट अस कैलकुलेट द एवरेज पीरियड. If it is being withdrawn at the middle of every quarter, it means अप्रैल मई, 15th मई को पहला विड्रॉल होगा, 15th मई, और ये लास्ट क्वार्टर में जो विड्रॉल होगा वो जनवरी फरवरी, यानी 15th फरवरी. It means what? 1.5 month has already gone. So out of 12 months, how much is left? 10.5 months. 10.5 मंथ्स इस्तेमाल करेगा उस पैसे को, और जो पैसा निकालेगा 15 फरवरी को, वो पैसा इस्तेमाल करेगा कितने दिन? 15 दिन फरवरी में, मार्च का पूरा महीना यानी 1.5 महीना, यानी 1.5 मंथ. 1.5 मंथ्स. देयरफॉर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 1.5 यानी 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6 मंथ्स. सो विड्रॉल अमाउंट टोटल 20,000 into 6 upon 100 into 6 by 12. So we can calculate this value. Here what will be the value? 6 1 is 6, 6 2 is 12, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 0 cancel, means 600 rupees. And here what will be the calculation? 0 decimal cancel, 0 cancel this 3 zeros, 20 छकेगा 120, 120 into 45 मतलब 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6, 12 4 जा 48 और 6 54.
20 का ये तो 0 कैंसिल किया, दशमलव तक इससे भी कैंसिल किया, 20 जगह का 120 गुणे 45 तो 5400। So this is how we will calculate interest on drawing made by partners at fixed interval of time and the amount is also fixed. So I hope कि आप सभी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा. Still if you have any problem, please write in the comment section, ask your questions, and keeping in mind those comments I will solve in the next video. But please do not forget